Hello kids, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to start chapter 7, saying without speaking, for our revision work. Okay, as you all know that we have completed chapter number 4, 5 and 6 in our revision work. Okay, so here today we are starting saying without speaking. Okay. So as we all know, okay, we know about the world around us by how? By seeing, okay, by hearing, by touching, smelling and also by the taste of the different things we eat. Okay, so ये हमारे लिए कैसे possible है? We see with the help of our eyes, okay, and we hear something from with the help of our ears, okay, and we touch or we feel something with the help of our skin, okay, and we smell something with the help of our nose, okay, and we taste about the different things we eat. How do we taste? We taste with the help of our tongue. Is it clear to everybody? So now we will discuss in detail about our 5 sense organs, okay. So the first one is eyes, second is ears, third one is skin, and the fourth one is tongue, and the fifth one is nose. Okay, so first of all we will discuss about the eyes. Okay, so our eyes help us to see the beautiful world around us, watch our television show, read a book and see people and things. Okay, so with the help of our eyes what we can see, हम क्या क्या देख सकते हैं, हम जो beautiful world है, जो क्या है हमारा जो beautiful environment है उसको हम लोग देखते हैं. ओके, और क्या करते हैं, जो हमारा फेवरेट टेलीविजन शो होता है, जो हमारे कार्टून शोज होते हैं, उसे हम किससे देखते हैं, उसे हम अपनी आंखों से देखते हैं. ओके, एंड वी रीड अ बुक ऑल्सो. हम आंखों से क्या करते हैं, हम लोग आंखें जो होती हैं हमारी वो किस लिए और हेल्पफुल होती हैं, बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए. ओके, लाइक स्टोरी बुक्स आर देयर, ओके, कॉमिक्स आर देयर. ओके, एंड our eyes work like a camera. They record the sights around us and send the message to the brain. Okay, तो जो हमारी आईज होती हैं वो क्या करती हैं, जो हमारे आसपास हमें दिख रहा होता है उसको क्या करती हैं, वो रिकॉर्ड कर लेती हैं और कहाँ मैसेज भेजती हैं, हमारे ब्रेन में. ओके, द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड टेल्स अस what we are looking at. Okay, तो जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या करता है, ब्रेन उस मैसेज को पढ़ लेता है और उसके बाद फिर क्या होता है, वो हमें ये बताता है कि हम किस चीज को देख रहे हैं. ओके, some people cannot see things very clearly. Okay, जो कुछ लोग होते हैं वो क्लियरली चीजों को नहीं देख पाते हैं, उनको बिल्कुल कोई भी चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं. So what they used to do? Okay, they need to wear spectacles to see better. Okay, तो साफ दिखने के लिए या अच्छा दिखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चश्मा पहनते हैं. Okay, so again I am repeating this one, that how our eyes are helpful for us. Our eyes help us to see the beautiful world around us, watch our that favorite television show, read a book and see people and things. Okay, our eyes work like a camera. Okay, and they record the sights around us and send the message to the brain. Okay, the brain reads the message and tells us what we are looking at. Okay, and some people cannot see things very clearly, so they need to wear spectacles to see better. Is it clear to everybody? Okay, next is what? Next is ears. Okay, so our ears help us to listen different kind of sounds. Okay, like the chirping of a birds. Chirping of a birds means जो चिड़िया क्या करती हैं, जो चहचहाती हैं. Okay, a lullaby, honking of cars and buses, bursting of crackers and all other sounds around us. तो जो क्या होता है, जो गाड़ियों से, जो बसेस से जिस तरह का क्या आता है, जो शोरगुल आता है, जो उनसे हॉर्न वगैरह की जो आवाज होती है. ओके, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब पटाखे फूटते हैं उसकी आवाज. ओके, और अलग अलग की बहुत सारी आवाजें हम किससे सुन पाते हैं, वी कैन लिसन थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर ears. Okay,
The ears collect the sound and send the message to the brain. और ear क्या करता है, जो साउंड होती है उसको कहाँ कलेक्ट करता है, ईयर में, फिर वो मैसेज कहाँ जाता है, वो मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है. ओके, द ब्रेन टेल्स अस व्हाट द साउंड इज एंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. तो ब्रेन हमें क्या बताता है, ब्रेन हमें बताता है कि ये किस तरह की आवाज है और ये कहाँ से आ रही है. ओके, एंड इट ऑल्सो टेल्स अस वेदर द साउंड इज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट. और वो हमें क्या क्या बताती है, वो हमें ये बताती है कि प्लीजेंट मीन्स कि ये साउंड अच्छी है, अनप्लीजेंट मीन्स या ये साउंड बुरी है. ओके, सो सम पीपल हु कैन नॉट हियर वेल वियर अ हियरिंग एड. ओके, तो जो लोग साफ से नहीं सुन पाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने कान में एक मशीन लगाते हैं. आपने देखा भी होगा. ओके, इट इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट worn in the ear. So where we used to wear that instrument? In the ear. Okay, there are some people who cannot hear at all. Sometimes those who are born without the sense of hearing cannot speak either. Okay, तो कभी कभी क्या होता है, जो लोग सुन भी नहीं पाते हैं और क्या होता है, वो लोग अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं. ओके, सो दे लर्न टू यूज द साइन लैंग्वेज एंड आर एबल टू कम्युनिकेट वेल. तो वो लोग किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो लोग साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं अपने को एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द साइन लैंग्वेज. डू यू नो दैट व्हाट इज अ साइन लैंग्वेज? Sign language is a means of communication in which we communicate through bodily movements, okay, especially with the help of our hands and arms. Okay, तो साइन लैंग्वेज किस तरह का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें हम कैसे आपस में बात करते हैं, जिसमें हम अपने स्पेशली किस बॉडी पार्ट को हम यूज करते हैं, अपने हैंड्स एंड अपनी आर्म्स को. ओके, next thing is that skin. Okay, about the skin we are going to discuss is the skin helps us to touch and feel. It covers our entire body. It tells us if something is hot or cold, smooth or rough, hard or soft. Okay, so you can tell your mother that the milk in the glass is hot or cold by touching the glass and feeling it through your skin. Okay, तो जो हमारी स्किन होती है वो हमें किस चीज में हेल्प करती है, हमारी स्किन हमें किसी भी चीज को टच करने में और फील करने में हेल्प करती है. ओके, और हमारी जो फुल बॉडी है वो किससे कवर हो रखी है, वो हमारी स्किन से कवर है. ओके, एंड जो हमारी स्किन होती है वो हमें किस चीज में हेल्प करती है, वो हमें इस चीज में हेल्प करती है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है. ओके, कोई चीज सॉफ्ट है या हार्ड है. ओके, एंड व्हेन योर मम्मा गिव्स यू अ ग्लास ऑफ हॉट और कोल्ड मिल्क. ओके, सो आप मम्मा को क्या बता सकते हो कि ये जो मिल्क की जो ग्लास है वो ठंडा है या गर्म है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इट इज अबाउट द टंग. ओके, सो नेम सम ऑफ योर फेवरेट फूड आइटम्स. व्हाट टेस्ट डू दे हैव? Do you prefer chocolates and ice creams which have a sweet taste, or potato chips and fries that are salty, or tamarind pickle which is sour? Okay, our tongue help us to taste. There are taste buds in our tongue which help us to understand if a food is sweet, salty, bitter or sour. Okay, so हम लोग कोई भी फूड आइटम को कैसे टेस्ट करते हैं, हम कोई भी फूड आइटम को अपने टंग की हेल्प से टेस्ट करते हैं. ओके, सो हमारी टंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी टंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, टेस्ट बर्ड्स हैं. ओके, तो जिससे हमें क्या होता है, जिससे हमें अलग अलग टेस्ट का पता लगता है, लाइक स्वीट, ओके, सॉल्टी, बिटर एंड सार. ओके, सार मीन्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ सार इज खट्टा. ओके, लाइक टैमरिंड, लेमन. सो विच काइंड ऑफ फूड दे आर, ये कैसे होते हैं टेस्ट में, सार होते हैं, खट्टे होते हैं. ओके, बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, लाइक नीम इज देयर. ओके, एंड दैट बिटर गॉड इज देयर, लाइक करेला. ओके, तो वो कैसा है टेस्ट में, वो कड़वा है. ओके, सॉल्टी, लाइक चिप्स आर देयर. ओके, वेजिटेबल्स दे आर in so they are salty in taste. Okay,
and next is sweet. Okay, as you all know that you all love to eat chocolates and ice creams. तो वो कैसे होते हैं टेस्ट में? वो टेस्ट में मीठे होते हैं. Okay, is it clear? Next is nose. So how our nose is helpful for us? Our nose help us to smell. तो नोज की हेल्प से क्या होता है? नोज की हेल्प से हम चीजों को सूंघते हैं. ओके, देन इट पिक्स अप बोथ द गुड एंड द बैड स्मेल्स. ओके, तो जो हमारी नोज है वो दोनों तरह की स्मेल को क्या करती है? हमें पता लगता है कि ये बैड स्मेल है या गुड स्मेल है विद द हेल्प ऑफ आवर नोज. ओके, सो अगेन नोज ऑल्सो सेंड्स द मैसेज टू द ब्रेन. तो जो नोज है पहले किसी भी चीज की स्मेल करके मैसेज कहाँ भेजती है? हमारे ब्रेन में. ओके, एंड द ब्रेन टेल्स अस व्हाट द स्मेल इज एंड इफ द स्मेल इज गुड और बैड. तो उसके बाद कौन हमें बताता है कि वो स्मेल गुड है बैड है? दैट इज अवर ब्रेन. बट पहले स्मेल किसने किया? पहले स्मेल नोज ने किया, फिर नोज से वो मैसेज कहाँ गया? हमारे ब्रेन में. इज इट क्लियर? टिल नाउ इट इज क्लियर टू. सो next thing which we are going to discuss is that some people are also there who cannot see. Okay, but they can also read and write by using a system of raised dots known as the brain. Okay, तो कुछ लोग क्या होते हैं? कुछ लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग क्या हैं? वो लोग पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ brain. Okay, so these raised dots stands for various letters which they feel with their fingers. तो वो लोग कैसे फील करते हैं? तो क्या होते हैं? कुछ उसमें डॉट्स होते हैं ब्रेन में. ओके, तो उन डॉट्स को वो लोग टच करके फील करते हैं. रेज डॉट मीन्स उठे हुए डॉट्स होते हैं. ओके, सो उन डॉट्स को वो लोग टच करके फील करते हैं कि ये किस लेटर के लिए कौन सा डॉट है या होगा. इज इट क्लियर? So again I am repeating it. Some people are also there who cannot see, but they can also read and write by using a system of raised dots. Okay, known as the braille. तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम braille बोलते हैं. Okay, these raised dots stands for various letters which they feel with their fingers. Is it? So this kind of dots you can see on the braille script. Okay, and which denotes these alphabets. Okay, in braille script this means A. Okay, one big dot you can see and 1 2 3 4 5 small dots are there and one that big dot is there, so it is denoted as letter A. किसमें ये जो डॉट्स हैं ये लेटर्स को डिनोट करते हैं? किस लैंग्वेज में? दैट इज इन ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके, ब्रेल में. एंड इट डिनोट्स बी, इट डिनोट्स सी, डी, ई, एफ. इज इट क्लियर? एंड हु इन्वेंटेड दिस ब्रेल स्क्रिप्ट? लुइस ब्रेल. ओके, लुइस ब्रेल इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अगेन आई एम टेलिंग यू हु इन्वेंटेड दिस ब्रेल स्क्रिप्ट. Louis Braille invented the Braille script. Is it clear to everybody? Okay. So some important points we are going to discuss. Okay. So the people who cannot see things very clearly, they need to wear spectacles. Okay. जो लोग क्या हैं? जो लोग चीजों को क्लियरली नहीं देख सकते हैं तो उन्हें क्या पहनना चाहिए? उन्हें spectacles means चश्मा. Okay. टू सी बेटर, चीजों को और क्लियरली अच्छे से देखने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज सम पीपल हु कैन नॉट हियर वेल वियर अ हियरिंग एड. ओके, तो जो लोग अच्छे से सुन नहीं पाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? हियरिंग एड एक स्मॉल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होती है जो अपने कान में वो लगाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन in which we communicate with bodily movements. Okay, earlier I also explained you about this, especially with our hands and arms. Okay, तो साइन लैंग्वेज का कौन यूज करता है? साइन लैंग्वेज का वो यूज करते हैं जो लोग ना सुन सकते हैं अच्छे से ना बोल पाते हैं. ओके, तो दे यूज विच लैंग्वेज? दे यूज साइन लैंग्वेज. ओके, so sign language is a means of communication in which we communicate
with bodily movements, especially with our hands and arms. Is it clear to everybody? Okay. So the next thing is that by looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. Okay? तो कभी कभी क्या होता है, हम किसी का फेशियल एक्सप्रेशन देख के भी बता सकते हैं या बता देते हैं कि वो पर्सन खुश है, दुखी है या गुस्सा है. Okay? And do you know that in dance, okay, we can also talk with the help of our hands. Okay? So in dance, the hands and face are used to convey feelings. So these are called mudras and bhavas. Okay? So डांस में क्या होता है, डांस में जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं और आपके जो हैंड्स मूवमेंट्स होते हैं, उनसे भी क्या होता है, उनसे भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें डांस के थ्रू अपनी बात बताते हैं. ओके? सो इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मुद्रास एंड भावास. ओके? For example, if 6 to 8 month baby is there, okay, so how he or she will express himself or herself, वो अपने को कैसे एक्सप्रेस करेंगे. अगर 6 to 8 month का बेबी है छोटा, तो वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करेगा, वो खुद को स्माइल करके, रो के, अपने हैंड मूवमेंट से. ओके? तो इस तरह से वो बेबी अपने को एक्सप्रेस करेगा. ओके? Is it clear to everybody? There are some questions which is based on this chapter. We will do this exercise. Okay? First question is that tick the correct answers. Okay, so whatever the correct answer will be, we have to tick it. Okay, first statement is that it covers our entire body. उस चीज ने हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखा है. So the options are skin, taste buds और nose. So the correct answer is skin. हमारी पूरी बॉडी को किसने कवर करके रखा हुआ है, हमारी स्किन ने. ओके? Next is that a system which helps people who cannot see to read. Okay? एक सिस्टम जो किसकी हेल्प करता है, जो उन लोगों की हेल्प करता है जो पढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं. Okay? So it is known as braille system, sign language और sense organs. So the correct option is braille. Okay? Next is that taste buds are present on the. taste buds कहाँ होते हैं? It is on our nails, हमारे नाखूनों पे होते हैं. It is on our tongue, हमारे टंग में होते हैं. या it is present on the eyes. कहाँ पे होते हैं? The correct answer is tongue. Okay? Again I am repeating these questions. First one is that it covers our entire body. So options are skin, taste buds and nose. So the correct answer is skin. Okay? Next is that a system which helps people who cannot see to read. Okay? So the options are braille, sign language or sense organ. So the correct answer will be braille. Okay? Next is that taste buds are present on the nails, tongue or eyes. So the correct answer is tongue. Okay? So you have to revise this question. Is it clear to everyone? So the next question is that you have to match the following organs of the body with their senses. Okay? So the first one is skin, second one is eye, third one is nose, fourth one is ear and the fifth one is tongue. Okay? And the senses are sight and vision. Means sight means देखना, taste, okay, touch, smell and hearing. Okay? Now we will match these. Okay? So skin, its sense organ is touch. Okay? Eye, sight or vision. Okay? Nose help us to smell. Okay? And tongue help us to taste. Again I am telling you, skin helps us in touching or feeling something. You know, touch or feel. Okay? Eye helps us in see something, so it will be sight or vision. Okay? And nose helps us in smell something. Okay? And ear helps us in hearing. Okay? And tongue helps us in tasting something. Okay? Till now it is clear to everybody. Now what you have to do, you have to revise this question answers properly. Okay? That's all for today. Thank you and have a nice day ahead.